H1 टैग लिखेंगे फॉर हेडिंग। देन अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले अनऑर्डर्ड टैग लिखो, इसका मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। हर एक आइटम के लिए लिस्ट टैग यूज करेंगे। फिर अपने लिस्ट्स में आइटम्स टू लिख देंगे। इसके ऊपर एक H3 टैग देंगे फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट हेडिंग। इसके बाद ऑर्डर टैग ओपन करेंगे। फिर अपनी लिस्ट आइटम्स को कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे।